Okay, so now I'm going to start data type. We have studied how we will create the class and inside the class, how can we declare the variable, how can we create the constructor, how can we create the method, both type of method, static and non-static. So now which data type we can use, we will run, then we will use it in Visual Force page as well as in Apex class. Okay, so data types. हेलो सर। Yes. सर लास्ट टॉपिक जो आपने कल पढ़ा रहे थे स्टैटिक मेथड कैन बी ऑल इन नॉन स्टैटिक मेथड उसमें Mm-hmm. सर उसमें सर आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया था सर। वो डाउट था कि कैसे कर सकते हैं कॉल और किस पे नहीं कर सकते हैं। मैंने कराया था या नहीं करा, मतलब सारे स्टूडेंट आई थिंक पढ़ाया था मैंने। हम हमने किया था सर, वो कॉल खत्म हो गया था। पर बिना रिकॉर्डिंग के हमने वो कंप्लीट किया था। उसमें एक में एरर आ रहा था और एक कॉल हो रहा था। हाँ, ठीक मैंने है मैम, पाँच मेरे को मिनट आप बता देना बाद में। अच्छा। कल आप क्लास में थे मिश्रा जी? सर मैं था, मीटिंग ओवर हो गई थी। आपने एक लिखा था सम फंक्शन, उसमें सर आप में एरर दिखा था, मतलब कि आपने पब्लिक नहीं कर रखा था। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सर देखी थी दो दो बार सर। अच्छा, सर मैंने तो ला कल मैंने मतलब मैंने वीडियो खत्म होने के बाद मैंने जब भी बोला था 5 मिनट के लिए ज्वाइन करो, आई नॉट रिकॉर्ड द सेशन एंड वो चीज़ हमने खत्म करी थी बिना रिकॉर्डिंग के। सर मैंने मिस कर दिया होगा सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप पढ़ते हैं क्या होता है। इज एनीवन हु वुड लाइक टू डिफाइन द डेटा टाइप? प्रीति मैम, मुक्ता, डिफाइन करना चाहोगे? शर्मा जी? सर data type specify how much amount of memory we are giving to variable, यस, and which data we are going to store in that variable. गुड, या। So according to ma'am, how much amount of memory and you want to create and which type of data you want to store. So that for that purpose you use data type. Okay, we are taking one example. Okay, so we have juice. Okay, we have to store the juice. ठीक है, हमारे पास juice है and you have to store it. So where you can store it? इन कंटेनर Container. चेक। ठीक है, गिलास। glass, container और मग। ठीक है, बॉटल में भी कर लेते हैं। बोतल। जी, bottle की spelling, is anyone can tell me the spelling of bottle? सही है यू सर। डबल टी एल ई। सही है ये या डबल टी? डबल टी। डबल टी आएगा सर। डबल। या, क्लास बॉटल कंटेनर। ठीक है, इफ वी हैव juice, so we can store it in glass. Okay, if you are not happy with glass, means juice is more and we are unable to fill the juice in a glass, so that time we are not happy with glass, it will not work. Okay, we have bottle. Now we are replacing the glass with bottle. We have bottle, now we are putting the juice in bottle. Okay, if you all juice are means if you are able to fill the juice in a bottle, good. If you are unable to fill the juice in a bottle, means you are not happy. We are not happy with bottle now also.
Okay, so that time what we need container, or you can say we need container, music, quality, you can say. Okay, so if juice is more and we are not happy with bottle, we are unable to fill it in bottle, can take another thing. We can take jug, music, these things. Now we are filling or putting it in a jug and we are happy with jug. Okay, we are able to fill the juice in a jug. So which thing I am using here, what is it? These are the data type. ठीक है, क्लास में मैं स्टोर करके रख रहा हूँ जूस को। क्लास क्या है? एक डेटा टाइप है जूस के लिए। बॉटल क्या है? बॉटल में मैं स्टोर कर रहा हूँ, एक डेटा टाइप है जूस के लिए। कंटेनर है, कंटेनर को जो यूज कर रहा हूँ मैं, वो डेटा टाइप है जूस के लिए। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इफ यू आर यूजिंग द ग्लास, okay, we are using glass. So which type of glass you are using? I'm using plastic glass, steel glass. गोल्ड, गोल्ड सर। Okay, glass, कंच के ग्लास, then gold के ग्लास, silver glass, and paper glass, foam glass. Okay, so what is it? Plastic, steel, glass, gold. What is it? Data type. Is it data type? आइडेंटिफायर। यस, स्टोर करेंगे ना। वेरिएबल नेम। Yeah. What is it? These are the variable name. So in steel class, there is one thing, steel. What we are doing? We are storing juice in steel. Okay. What, which type of you can say how much amount of juice we are storing? So we will check the data type. It's a glass. Glass means 250 ml. In glass, what we can store? We can store juice, water, these things. If I'll say boil, what we can store? We can store vegetables, sabji. Okay. So if we have to store vegetable, we will use bowl. If we have to store water, we will use glass. If we have to store chapati, we will use other thing. If you have to store, you can say achar, you will use another thing. So on the basis of data, what you are doing, you are changing the data type. Okay. So what we will do, we will check which type of data we have to store. Which type of data we have to store. On the basis of data, we will select the data type. And another thing we will also check how much amount of data you have to store. If you have to okay, juice we can store in glass also. If juice are more, that time we will not use glass, we will select bottle. So okay, what is data type? Which type of amount? Data type will specify which type of data you have to store and how much data you have to store. So these things you will identify with the help of data type. ठीक है, किसी को कोई डाउट डेटा टाइप की डेफिनेशन में? Plastic, steel, glass, gold, silver, foam. What is it? These are the variable. क्लास डेटा टाइप है। क्लास में 250 ml और जूस स्टोर कर सकते हैं, जूस एंड वाटर हम। ठीक है, 250 ml। ठीक है, प्लास्टिक टाइप का एक वेरिएबल है कि प्लास्टिक टाइप का ग्लास चाहिए, स्टील का ग्लास, कंच का, गोल्ड का, सिल्वर का, फोम का, इस तरह का आपको ग्लास चाहिए, वेरिएबल नेम है। जूस, जूस स्टोर करते हैं। किसी को कोई डाउट है डेटा टाइप की डेफिनेशन में? यस और नो तो बोल दो। नो सर।
So why data type? We will specify which type of data we want to store, and we will also check the size. What will be the size? Okay, we will also control the size. ठीक है. अब how much type of data types we have in language, in Java, in Apex? 11 in Apex, I think. No, I think primitive and अच्छा वो on this Uh, there are two two data types. types, primitive and non-primitive. And in primitive, there are 8 data types in Java. Okay, so there are two type of data type in Apex class. First one is primitive. Second one is non-primitive. Okay, so primitive data type, non-primitive data type. What is primitive? What is non-primitive? Okay, so primitive data type means if you want to store one value, that time you will use primitive data type. Okay, or you can say if you want to store less data, that time you will use primitive data type. If you want to store more data, that time you will use non-primitive data type. Okay. Sorry, sir, can you repeat, sir? Yeah. Your voice was breaking. Means in primitive data type we will store one value only. Okay, and we can say less data we will store in primitive data type. If Okay. data is more, that time we can't store it in primitive data type, we will use non-primitive data type. Okay. Okay. So primitive data type can say can hold one value at a time. Okay, so how much memory it will take? It will take very less memory. Okay, so what is the example? So we have integer, we have double, decimal, these are the examples. Date, time, date, time, String. and long also. Okay, so these are the example of you can say primitive data type. So here you can say according to Preeti ma'am, she is saying string is also primitive data type. So Sarma ji, string is primitive or non-primitive? Yeah, so string is non-primitive. Okay, Why, sir? But in string we can store only one value. ठीक है.
According to Sharma ji, string is non-primitive. According to Preeti ma'am, it's primitive. ठीक है, इसके ऊपर अभी झगड़ मतलब कि डिस्कशन कर लेंगे. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव. Okay, what is non-primitive data type? So non-primitive data type can hold multiple value at a time. Okay, so what will be the size of the non-primitive data type? It will less or more. So as compared to primitive data type, it will be more. Non-primitive data types take more memory as compared to primitive data type. Okay, example. Okay, so what is the example? All the collection which we will study, these are the example of primitive, non-primitive data type. Okay, if we are defining any object, object is also, you can say, example of classes, non-primitive data type. Okay, class, arrays, object, array, you can write array, Interface. interface, interface, strings. string also. string, etc. Okay, so why string is coming in non-primitive type? Let's suppose there is one variable name and I want to store my name is Priti Seni. So can I store it in name variable or not? This statement I can store it in name variable or not? Yes, sir, you can. We can Yes, we can store it. Is it one value or we have Yes, more it's value? Sir, it's a collection of array, like like a array of character. If we are talking about the string, this is the array of character. My name is Preeti Sani. Yeah. Okay, so it's according to Tushar, it's the array of character, but we can but store in double string also we can use many more numbers. double string. But if we are talking about the memory, then this is an array in which there has been the many of the character, as many of the character into one. Okay. शर्मा जी कुछ डिटेल में समझाओ. सर बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है वो लाइक जो मेमोरी एलोकेट करती है वो एरे के फॉर्म में करती है, लाइक कलेक्शन ऑफ एरेज के फॉर्म में करती है, इसलिए अपन उसको एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं. like if so बट ये yeah. मल्टीपल वैल्यूज थोड़ी ना स्टोर करती है. जैसे आईडी ले लो, अब आईडी एक ही आईडी को ले सकता है ना, ये मल्टीपल आईडीज को थोड़ी ना लेगा स्ट्रिंग में. तो हमें आईडी मल्टीपल आईडीज रिटर्न करवा, सॉरी रिटर्न की बात नहीं करूंगा मैं, स्टोर करनी है. जो भी यस हम्म स्टोर करनी है तो. अब वैसे तो जैसे इंटीजर होता है उसमें भी हम कितने भी ले सकते हैं ना नंबर्स तो. पर स्पेस तो नहीं होते ना उसमें, करेक्टर के बीच में स्पेस. यहाँ जो शर्मा जी स्पेस ने भी मायने रखता है क्या? So यस यस. can I also try? Sir, I think is
मिश्रा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो स्ट्रिंग को हम एज ए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हाँ इसमें हाँ वॉइस जी। ऑडिबल। यस यस। सर स्ट्रिंग जैसे तुषार सर ने बोला कि तुषार ने एरे फॉर्म हम्म। में होती है, तो मेरे स्ट्रिंग सर जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल टाइप होता है, तो इसमें सर जो नेमिंग जो भी कैरेक्टर्स होता है उनको इंडेक्सिंग असाइनिंग नहीं होती, तो इसमें देयर इज नो लिमिट कि आप कितने भी कैरेक्टर ले सकते हो। हम्म। सो स्ट्रिंग हमारी एरर फॉर्म में तो स्टोर नहीं होती है, वी कैन से दैट कि स्ट्रिंग हमारी देयर इज नो लिमिट, क्या हाँ इम्यूटेबल वो, होती है। हाँ हाँ, मतलब कि स्टेटमेंट देखो सबके अलग अलग ही मिलेंगे इंटरनेट पे भी, पर ये है कि हम एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। if I'll divide it in you can say JSON string form, so what we will get my is another thing। सर आप स्प्लिट की बात कर रहे हो कि हम मतलब इसको स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, ये सर इस तरह से पाइथन ब्रेक का। होएगी ये। हाँ सर, जैसे हम यूआरएल को भी स्प्लिट करते हैं, हम्म। तो वो यूआरएल को भी स्ट्रिंग फॉर्म में लेके और उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हम मल्टीपल मतलब बहुत सारे करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेशन कुछ ओके, भी ले, एक ज्यादातर एक ही स्टोर करते हैं, बट वी कैन स्टोर इट ठीक है 10। सर, समझ गई, अब समझ गई सर। ठीक है। So any doubt in data type? What is data type? What's the definition of data type? How many types of data type? These things. कोई डाउट नहीं, आगे चलें। यस सर। सर कैन वी टेक अ स्क्रीनशॉट? So, डन सर। good. Okay, now I'm going to write some primitive data type. We will finish it, then I'll start how we will declare the non-primitive data type, these things. Okay, so I'm going to open developer console and I'll declare the variable in Apex class, then I'll debug it. Okay, I'll print the value in console screen as well as I'll print the value in Visual Force page also. Okay, so we will print the value in both in console screen as well as on Visual Force page. So I'm going to create one class, file new Apex class. Okay, so what's the good way to write the class name if you will use it in Visual Force page? CTRL, I control. Okay, according to Mukta, I have tried CTR. Okay, any other participants who wants to say something here? आर यू टॉकिंग अबाउट नेमिंग कन्वेंशन ऑफ क्लास नेम? Yeah, means naming convention is, yeah, naming convention, tell me naming convention as well as what's the good way to write the class name. Class name को जब हम अपर कंप्लीट केस। करेंगे। Okay, CTRL. यस सीटीआर, आई आल्सो सीटीआर। okay. Hina ma'am, can you define to Preeti ma'am what's the difference between upper camel and uppercase? अपर केस में सारे लेटर्स बड़े होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, और अपर कैमल में इफ वी हैव टू सर मैंने वर्ड्स लाइक प्रीति अपर प्रीति। कैमल नहीं बोला। हाँ करेक्ट।
Ma'am, you have not told uppercase. You have not told upper camel. You have told upper case. Okay, sir. Okay, and yesterday you also told uppercase, uppercase. सर मैं That's क्या why I'm करूँ, saying. निकल जाता है मेरे मुंह से, जबकि मेरा मतलब वही होता है। हम पता है मुझे कि मतलब कल आप बोल रही थी यू वर सेइंग अपर केमिल केस दैट टाइम व्हाट वी विल सी अपर केमिल और अपर केस. पर कैमल। Okay, so whenever we will define the class, so we have to use one extension, that is CTRL. Okay, if you are using class in Visual Force Space, in Aura component, or in LWC, so you have to use extension that is CTRL. Okay, it's a good approach. So what I'll do, I'll declare the variable, I'll print it in console screen, as well as I'll print it in Visual Force page. So what I will do, if I'll call the class in Visual Force page, I have to mention the extension also, that is CTRL. So data type, example, CTRL. So CTRL, what's the meaning? It's a controller. It's a controller. Okay, so I'm using CTRL extension. So if you want to write it, you can write it. You are using class Visual Force Space, Aura component, and LWC. So you have to use CTRL as a extension. Example, account display CTRL. Insert account CTRL, etc. Okay, if you want to write it, you can write it. If you know, it's also okay. So whenever you will use the class in Visual Force Space, it's necessary to add the CTRL extension in class. Okay, it's a good way. Okay, so now what I'm doing, I'm going to create one method. I'm not creating any method. I'm writing only constructor. Okay, now what I'm doing, I'm going to create the data type. So I'm going to declare and assigning the value together.
First I'm declaring the variable. So first I'm going to create integer type of data type. First data type is integer type of data type. So we will write x specifier, then data type, integer. Okay, write any name, a, then separator. Okay, next data type which we have, that is long. Public long p. Okay, now in constructor what I'm doing, I'm going to assign the value integer a is equal to 10. Yeah, now p is equal to, first I'm writing integer. So I'm getting one error. So who will tell why I'm getting this error? Sir, can I? Yeah, sure, Miss Raji. Sir, integer have a some range, and the range will be something, I don't know the range value. So it will be not be extend 32-bit. 32-bit. Yes, Yeah, sir. good. So we have integer data type. Integer means we can store number type information. Okay, what is the range? So I already told you that means on the type, two things are depends on the type. First is which type of data you are storing. If you want to store number type data, is use integer. And what will be the size? ठीक है, कि साइज क्या होगा वो भी डिपेंड करता है डेटा टाइप पे. So there is some limit. We can store 32-bit data, which means we can store 10-digit information in 10 digit, like 2147. Yeah, so it's the limit. So if you want to store 10-digit data, less than 10-digit data, that time you can use integer. If data is more than 10 digit, use long. Okay, so it's the limit. If value is greater than this value, that time you will use long data type. You can't store it in integer. So here I'm writing long, and again I'm going to save it. Again I'll get error message. So now can you tell me why I'm getting error message after writing the long also? You have to write L, capital L We can last. write to be L after assigning the value. Okay, so whenever we will use the long data type, we have to mention the, we have to specify it's the long type of data. So I have written L here. Now I'm able to store it. Okay, perfect. Now what I'm doing, I'm going to debug it. System dot debug. Okay, now I'm writing a value, b value. Now I'm going to save it. So I want to print it on console screen. How can we print it? We can print it with the help of anonymous window. Okay,
So what we will do first, we will create the instance for the class, or you can say object for the class. Okay, so when I will create the object for the class, what will happen? Constructor will automatically create, or constructor will automatically execute. So I'm going to click on execute button, constructor will execute, and I'll get the data. Clicking on debug only. So here I am getting the data. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No doubt, sir. Good. So yeah, meeting will over within some second. So you can take 5 minutes break, and we will connect at 11:41. Okay. Okay, sir. Okay, sir.